हाँ जी भाई, हम लोग आगे एक और नई वीडियो के साथ। और मार्केट में क्या चल रहा है इस वक्त, जन कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर ने क्या अनाउंस किया है, पहले आप ये वीडियो देखो, फिर आगे की बातें हम बाद में करते हैं। It would be a mistake to blame international students for the housing crisis, but it'd also be a mistake to invite them to come to Canada with no support, including how to put a roof over their heads. It's why we expect learning institutions to only accept a number of students that they're able to provide for, able to house or assist in finding off-campus housing. In welcoming international students, we have a responsibility to make sure that students are supported when they come to our country. We also want to ensure that international students don't become victims of unscrupulous individuals who offer them inadequate living conditions, sometimes even at inflated prices. Ahead of September 2024, we are prepared to take necessary measures, including significantly limiting visas to ensure that designated learning institutions provide adequate and sufficient student supports as part of the academic experience. In order to achieve this result, it is imperative that we work together with provincial and territorial governments, learning institutions, and other education stakeholders so we can ensure international students are set up for success in Canada. Enough is enough. If provinces and territories cannot do this, we will do it for them, and they will not like the bluntness of the instruments that we use. Our aim is to strike the right balance between welcoming international students and making sure they have all they need to thrive. I will communicate more on this in due course, but for today, I'm here to announce a few more immediate measures. International students need to be prepared for life in Canada, and we have a responsibility to make certain that they are well supported when they come to Canada. So starting on January 1st of next year, in 2024, the financial requirement for study permits will be raised to reflect the current cost of living. And as such, a single applicant will need to show that they have $20,635 in funds to support themselves in Canada, moving up from $10,000, as I mentioned in French. Moving to a more accurate cost of living level that helps international students arrive with necessary resources to live and study in Canada. Future increases will be tied to the low income cutoff that Statistics Canada publishes every year, similar to other immigration programs. This cutoff conveys the income below which an individual may be in strained circumstances as they have to spend a greater than average proportion of their income on necessities. Recognizing that students already have to show that they can cover their tuition as well as other travel costs, their cost of living threshold is set at 75% of the low-income cutoff rather than 100%, and puts us on par with our competitor countries. I'd also like to update you on 3 temporary policies affecting international students that were set to expire by the end of the year. The main purpose for an international student to be in Canada is to study. However, since most students are currently halfway through their school year and some are working full-time, to meet their needs, we will extend the temporary policy that has allowed eligible international students to work more than 20 hours per week through till April 30th of 2024, the end of the academic year. We're currently examining options for this policy in the future, but we know that 40 hours a week is untenable if you're a student, and are looking to potentially expand off-campus work hours for international students up to 30 hours per week while class is in session. Our data shows us that 80% of international students work more than 20 hours a week. We first implemented distance learning measures in 2020 due to the travel restrictions during the pandemic and reduced them in scope in September of 2022. But since the vast majority of international students are now actually studying in person in Canada, we're extending this measure only those starting programs before September 1st of 2024. And finally, in response to the labor market disruptions over the pandemic, we introduced a temporary policy granting post-graduation work permit holders an additional 18-month open work permit if needed. Those with a post-graduate work permit expiring by the end of this year remain eligible to apply, and we won't be extending that policy after that. अभी जो कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर ने क्या अनाउंस किया है, देखो यार कि दो अनाउंसमेंट्स हैं, एक गुड न्यूज़ एक बैड न्यूज़ है, ठीक है। तो पहले हम बैड न्यूज़ की बात करते हैं। तो यार जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि यार कि काफ़ी बुरा हाल चल रहा है कनाडा के अंदर, जॉब्स नहीं है, ठीक है। अगर जॉब्स है, प्रॉपर आवर्स नहीं मिल रहे स्टूडेंट लोगों को, तो यार यहाँ का जो लिविंग कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है। तो जिसकी वजह से स्टूडेंट्स लोगों का सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है कनाडा में। देखो यार, ना ही जॉब्स हैं,
ठीक है, अगर जॉब्स हैं तो प्रॉपर आवर्स नहीं मिल रहे हैं, और पहली बात तो जॉब बहुत कम है यार, ठीक है, बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं जॉब्स। तो उसकी वजह से कनाडा गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो पहले हम, जब भी कोई स्टूडेंट जब वीज़ा अप्लाई करता है तो वो पहले $10,200 अपने जीआईसी में शो करता था, बट अब 1 जनवरी के बाद जो भी स्टूडेंट लोग अपनी फाइल जो अप्लाई करेंगे, ठीक है, स्टडी वीज़ा के लिए, उन लोगों को $20,635 एज ए जीआईसी शो करना पड़ेगा, जैसा आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो यार ये बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरह से कह सकते हो कि यार ये बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है स्टूडेंट्स लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि यार देखो कहीं ना कहीं इस चीज़ से ना जो फ़र्क पड़ेगा वो पेरेंट्स को पड़ेगा, पेरेंट्स के ऊपर एक बर्डन आएगा। देखो जो सारा खर्चा है ना स्टडी का, स्टडी से लेके जीआईसी, फ्लाइट के टिकट, सब कुछ यार वो पेरेंट्स ही करते हैं। तो ऊपर से 20,635 जो कि इंडियन करेंसी में यार बन जाएगा 12 से 13 लाख के अराउंड बन जाएगा। तो यार ये बहुत ज़्यादा एक बड़ी, एक कह सकते हो बैड न्यूज़ है। तो कनाडा गवर्नमेंट ने जो ये डिसीजन लिया है ना यार, उसके पीछे बहुत सारे रीज़न है, क्योंकि उन लोगों को भी पता है कि जब स्टूडेंट लोग यहाँ पे आ रहे हैं ना, तो यार अब बहुत सारी वीडियोस चल रही होंगी यार कि कोई जंगलों में टेंट लगा के सो रहा है, ठीक है, कोई सड़क पे ब्रिज के नीचे सो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें उन लोगों को भी पता है कि स्टूडेंट लोगों का यहाँ पे क्या हाल हो रखा है, ठीक है, ना ही उनके पास जॉब्स है और वो फीसें नहीं निकाल पा रहे हैं, अपने घर से पैसे मंगा रहे हैं, तो बहुत बुरा हाल हो रखा है। उन लोगों ने इन चीज़ों को आगे आने वाले कुछ टाइम तक ठीक करने के लिए उन लोगों ने जो ये जीआईसी की अमाउंट बढ़ा दी है, ताकि यहाँ पे आके स्टूडेंट लोग अपना खर्चा तो कम से कम पूरा कर सके, खर्चा तो निकाल सके, फीस तो बात की बात है, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग यार अगर कोई $20,635 अगर कोई जीआईसी शो करेगा, फिर 10 से 12 लाख फीस दे के कनाडा आएगा, और ये सब करने के बाद अगर उसको जॉब नहीं मिलेगी, तो यार मुझे नहीं लगता कि यहाँ आना उतना वर्थ इट अब है। ठीक है, मैं किसी को ये नहीं कहना कि आप आओ या मत आओ, मैं बस कह रहा हूँ कि क्योंकि देखो यार आप भी समझदार हो, अगर आप सोचो, अगर आप इतना पैसा लगाना चाहते हो, इतना पैसा लगा के यहाँ कनाडा आके स्टडी करना चाहते हो, तो अगर आप इतना लोन लेके यहाँ पे आ जाओ, फिर कहीं ना कहीं एक मेंटल प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है यार कि इतना लोन पे करना है, फुल डबल हो गया यार, कहाँ 10,000 कहाँ 20,000। तो ये तो रीज़न ये था, और जो दूसरा रीज़न है वो भाई जॉब है, ठीक है। तो जॉब का जैसा आप लोगों को पता है, मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा आप लोगों को, जिन लोगों ने 7 दिसंबर या 7 दिसंबर से पहले अपना जो स्टडी वीज़ा लगवाया है, वो आगे आने वाले 30 अप्रैल 2024 तक अनलिमिटेड आवर्स काम कर सकते हैं। काफ़ी दिनों से कनाडा गवर्नमेंट में प्रेशर था ये कि आवर्स की जो लिमिटेशन है इसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि यहाँ पे गुजारा नहीं हो रहा, बच्चे स्टूडेंट लोग अपना गुजारा नहीं कर पा रहे हैं, फीसें नहीं भर पा रहे हैं। इन लोगों ने जो ये लिमिट ख़त्म कर दी है, तो इसके भी प्लस पॉइंट है और नेगेटिव पॉइंट भी। प्लस पॉइंट ये है कि जो लोगों के पास ऑलरेडी काम था, जो कहीं काम कर रहे थे, तो देखो यार उन लोगों के लिए तो बहुत बड़ा फ़ायदा कि वो लोग वहाँ पे काम करेंगे। हमें वो भी देखना पड़ेगा यार कि जिन स्टूडेंट्स लोगों के पास जॉब नहीं थी, जो ऑलरेडी कनाडा में थे, वो लोग क्या करेंगे, और जो अब इंडिया से जो आएगा वो क्या करेगा, क्योंकि जब 40 आवर्स किए तो एक बंदा 2 बंदे की जॉब खा रहा है किसी भी कंपनी में, कहीं भी रेस्टोरेंट में। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस डिसीजन की वजह से जो इन्होंने जीआईसी का जो अमाउंट बढ़ाया है, अब जो स्टूडेंट्स लोग हैं ना, वो कनाडा को अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए मुझे नहीं लगता कि प्रेफरेंस देंगे ज़्यादा, वो शायद ऑस्ट्रेलिया या यूएस जाएंगे। बाकी बस यही था आज की वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।